Afternoon to all of you. Today we are going to learn the poem Leisure. Yesterday, before starting the poem, I told you about the poet as well as one of the literary device that is known as alliteration. Did all of you understand what alliteration is? कल जो मैंने alliteration बताया था सबको समझ में आया था? So you must have it in your mind. Okay, first of all, I read the poem for all of you. Everyone listen to me. How we can read the poem? We can recite the poem. Okay, will you tell me who is the poet of this poem? W. H. Davis. Very good. Will you tell me what is the full name of W. H. Davis? What is the full name of W. H. Davis? William Henry Davis. Okay. Now I read the poem for you. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare. Did you listen to me? Did you feel music? Did you feel music while I was reciting the poem? Do you know? Do you know why such type of music was realized by you? It was realized because of its rhyme scheme. Why was it realized? It was realized because of rhyme scheme. Rhyme scheme. As you can say, while I was reading, the last word, notice on the last word and the sound also, care and stare. Is the sound similar of both? The sound same है, care and stare. फिर आगे देखिए, बॉज एंड कॉज दोनों का साउंड सेम है, मगर केयर मगर केयर और बॉज ये अलग अलग है. तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? Can anyone tell what is the rhyme scheme of this poem? Look, care and stare both are similar sound, so they will be denoted by a. It will be denoted by a. Now the third line is boz. Boz is not similar to care or stare. It is different one. So it will be denoted by b. Thereafter in the fourth line you will find cause. Cause and boz both are similar. So again we will write b. In the fifth line you will see the word pass.
Pass is not similar to cows, bow, steer, or care. It is quite different. So here we will write C. In the sixth line, you will find grass. Grass is also not similar to care or steer. It is not similar to bows or cows, but it is similar to pass. Pass and grass. You can pronounce pass and grass. So pass has been denoted by C. So grass will also be denoted by C. So rhyme scheme of this poem is A A B B C C. Did you understand? Successfully right? No, no any confusion. So not only in this poem, in each and every poem, you can know the rhyme scheme by following this way. First of all, you have to pronounce the sound of the last word of the first line. Thereafter, you will pronounce the last word of the second line. If both are similar, then they should be denoted by AA. If they are not similar, then you should denote it by A and thereafter B. If the third line is also similar to A, then it should be A, or it is similar to B, then it should be denoted B, and it is neither similar to A nor to B, then it should be denoted by C. Is it clear to everyone? Okay. So I have once read the poem. Now I would like to invite one of the students, any one of you who would like to read the poem. Will anyone like to read the poem? No one? Honey is raising her hand. Okay, Honey, you may read. Very good, beta. Some more students have raised their hands, but this time I will explain the poem. And someone is trying to be an artist also. He has scratched some line on the screen. Yesterday also I had forbidden you, so don't try to come in problem. So let me explain first of all the poem. Thereafter I will give you opportunity to recite it. Let us see what the poet wants to tell us. The poet is a child. He is explaining the desire of a child, what he wants. ठीक है? What is in the mind of a child? What is his desire? It has been shown in the poem. Here the poet says, what is this life if full of care? He says, this life is full of care. Full of care means here lots of responsibilities. Lots of responsibilities. Do you understand the meaning of responsibility? Means our duties. Everyone has some duties in his life which he has to perform. The poet says that this life is not much interesting because it is full of care. Full of care means here lots of responsibilities. Every time someone is instructing, do like this, do like that, don't do this, don't do that, means every time be careful. Here the child wants to lead a carefree life. Carefree means chinta mukt. He wants to enjoy his life in a carefreely manner. But so many cares,
are instructed to him by parents or other persons, so he does not like it. And he says, we have no time to stand and stare. We have no time to stand and stare. Means here the poet wants to stand, and stare means look at something, किसी चीज को देखना, समझना. तो where does he want to stand? Where does he want to stare? So he wants to stand in the lap of nature. He wants to stare the beauty of nature. Are you getting my points, children? Huh. As he says, we have no time to stand and stare. So where does he want to stand? He wants to stand in lap of nature. प्रकृति की गोद में वो खड़ा होना चाहता है. What does he want to stare? He wants to stare the beauty of nature. वो नेचर के ब्यूटी को स्टेयर करना चाहता है. But he has no time to do all that. That is why he says, why this is life. Then he says, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. It means he wants to stand under the shadow of the tree. Bough means the branches of trees. बाव का मतलब होता है पेड़ की डालियां. उसके नीचे खड़ा होना चाहता है. आपने देखा है सेफर्ड को? सेफर्ड समझते हो तुम लोग? जानवरों को चराने वाला. तो कैसे वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसके गाय भैंस बकरियां चरती रहती हैं और वो उनको बैठ कर देखता रहता है. आपने देखा है कभी ऐसा? डू यू थिंक इट इज enjoyable? Do you think it is enjoyable? Why do you not reply? Tell me either yes or no. Yes, the poet wants to tell this one is enjoyable for him. He wants to enjoy his life by doing all these activities. He wants to stand beneath the boughs, means under the tree, and he wants to stare grazing sheep or cows. It is enjoyable for him. But he says that he has no time to do all that. Again, he says that he has no time to say, when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. Again, he says that when he is passing woods, do you know the meaning of woods? Woods means what? What? Wood? नहीं. Wood, wood. Listen to me. Wood means lakdi. But when we add s in wood, it becomes forest. Forest means jungle. For example, there are some more words like that. For example, water. Water means, but when we add s, when we add s in water, it becomes waters. And waters means ocean. Ocean means samundra. Similarly, when we add s in wood, and it becomes woods, it means forest. So the poet says, when he pass, when he passes woods, जब वो जंगल से गुजरता है, तो he wants to enjoy some activity which is going on in the forest. Which type of activities? The activity of a squirrel. The squirrel who is hiding, or the squirrels who are hiding their nuts in grass. A squirrel means गिलहरी. Yes, very good. स्क्वायरल मीन्स गिलहरी. आपने देखा है गिलहरी जो है चीजों को छुपा छुपा के रख देती है यहाँ वहां.
फिर उसको कुतर कुतर के खाते रहती है ना। तो वो इन चीजों को देखना चाहता है, इसको एंजॉय करना चाहता है। ही वांट्स टू सी द स्क्वायरल्स हु आर हाइडिंग देयर नट्स इन ग्रास। Again, he says that he has no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. Again, he is sad because he wants to see in broad daylight. Broad daylight का मतलब समझते हैं आप? ब्रॉड डे लाइट का मतलब बिल्कुल उजाले में। जैसे अभी का समय में देखो, बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट है ये, कहीं अंधेरा नहीं होगा, चारों ओर रोशनी ही रोशनी है। तो in broad daylight you will find streams full of stars. Streams means, stream means what? Bolo. If you don't know, you can say I don't know, sir. Okay, I just tell you. Stream means you can say jharna, chota talab, like that. That is full of stars. So now you would be thinking, how can a stream will be full of stars? Stars are always in the sky, not in water. Have you ever seen stars in water? No, sir. Okay. If there is any pond or river where you can see, you will find in broad daylight when sun shines. आपने देखा होगा कि जब धूप, everyone listen to me carefully and don't try to create nuisance sound and don't gossip. मैंने कहा कि जब सूरज जो है बिल्कुल 12-1 बजे का समय हो जाए, बिल्कुल दोपहर का वक्त हो, जैसे अभी है, और इस समय आप देखेंगे नदी में, तालाब में, अगर उसके पानी को आप देखेंगे, उसके वाटर को देखेंगे, तो जो सूरज की रोशनी जो है वो उस पे पड़ती है तो एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? चमक होता है। तो आप देखिए कि पानी के ऊपर जो है बिल्कुल शाइनिंग सा कुछ चमकता रहता है। आपने गौर किया है कभी? और वो देखने में कैसा लगता है? वो देखने में कैसा लगता है? गोल्डन लगता है वो स्टार की तरह लगता है ना। लगता है कि तारे हैं, बहुत सारे तारे। एक्चुअली दैट इज द सन साइन ऑन वाटर रिपल्स। जो वाटर रिपल्स हैं उस पे सन साइन होता है, और जिसके वजह से रिफ्रैक्शन में आप देखते हैं कि वहां पे शाइनिंग होता रहता है। वो पानी इतना तेज से चमकता है कि लगता है जैसे कि वो तारों से भरा हुआ है। तो पोएट इज सेइंग दैट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स का मतलब समझा आपने? बोलो बेटा। यस। लाइक स्काइज एट नाइट। लाइक स्काइज एट नाइट। जैसे रात के समय आप देखेंगे आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं। रात में आपने देखा है आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं ना। तो एज स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, द वाटर ऑफ स्ट्रीम शाइन इन द ब्रॉड डे लाइट इन द सेम मैनर, सो द पोएट थिंक्स ऑफ इट। तो यहाँ पे पोएट का स्ट्रीम ऑफ फुल ऑफ स्टार्स कहने का मतलब यही है कि एज स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, द वाटर ऑफ स्ट्रीम्स शाइन इन द ब्रॉड डे लाइट इन द सेम मैनर। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स का मतलब तो वो पोएट कहता है कि जैसे रात में आसमान में तारे ट्विंकल करते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रॉड डे लाइट में स्ट्रीम का जो वाटर है वो भी शाइन करता है, और ऐसा लगता है कि जैसे तारों से भरा हुआ है। वो उसको देखना चाहता है, बट ही हैज नो टाइम टू डू ऑल दैट। Again, he says that he has no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. वो कहता है कि beauty's glance, beauty means here the beauty of nature,
What do you mean by beauty here? Beauty means the beauty of nature. Yes, he wants to glance. Glance का मतलब भी होता है देखना. Glance का मतलब भी होता है देखना, enjoy करना. तो वो नेचर के ब्यूटी को देखना चाहता है, समझना चाहता है. आप देखिए नेचर में बहुत सारी चीजें हैं. जैसे हवा चलती है तो पेड़ कैसे हिलता है, पत्तियां कैसे हिलती हैं, फूल कैसे शेक करते हैं इधर से उधर, ये उनका डांस है. डालियां, पतली पतली डालियां हिलने लगती हैं, पत्ते हिलते हैं. तो दिस इज द डांस इन नेचर बाय नेचुरल थिंग्स. Poet wants to enjoy all these things. Again he says no time to wait till her mouth can and reach that smile her eyes begin. वो कहता है कि मुझे देखना है ये सारी चीजों को. After seeing all that, of course he would have a real smile on his lips. When you will enjoy the beauty of this nature, when you will focus on the beauty of this nature, undoubtedly there will be a real smile on your lips, and your eyes will start twinkling by seeing all these objects or activities of nature. जब आप प्रकृति की इन चीजों को देखेंगे तो आपकी आंखें खुद ब खुद जो है वो बड़ा सुकून महसूस करेंगी और आपके होठों पे एक स्माइल आ जाएगा, रियल स्माइल. लेकिन ये तब होगा व्हेन यू विल फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ दिस नेचुरल थिंग्स. जब आप इन प्राकृतिक चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, आप देखेंगे, उस पर ध्यान देंगे. But poet is sad because he has desired to do all these things. He wants to enjoy all the beautiful activities which are happening in nature, but he has no time to do all that. So he says that this is a poor life for him. Poor का मतलब not good. वैसे पुअर का मतलब गरीब होता है, तो यहाँ पे लाइफ को पुअर कहा जा रहा है. इट मीन्स नॉट हैप्पी, इट इज अ सैड लाइफ. वाई? बिकॉज इट इज फुल ऑफ केयर and he has no time to stand and stare. So actually because of lots of responsibilities or lots of tasks, we are so much busy in our life. आज का डेट में हमारा लाइफ कैसा हो चुका है, तुम ही लोग बताओ. बहुत बिजी हो चुका है, बहुत बिजी हो गया. हमारे पास बहुत सारे काम है, आपके पास भी बहुत सारे काम है. इंग्लिश भी पढ़ना, हिंदी भी पढ़ना, इंग्लिश का होमवर्क करो, मैथ्स का होमवर्क करो, टेस्ट की तैयारी करो, बहुत सारी बातें हैं. तो ये जिंदगी में व्यस्तता बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से हमें समय नहीं मिलता. और अगर समय मिलता भी है तो उसको हम लोग मिसयूज कर लेते हैं. अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप टाइम मोबाइल पे स्पेंड कर देंगे, टीवी पे कार्टून देखने लगेंगे, नहीं कुछ होगा तो सोने लगेंगे. टाइम तो है लेकिन टाइम आपको मैनेज करना होगा और प्रकृति की इन खूबसूरत चीजों को देखना हो, समझना हो. देन यू विल enjoy the real happiness of your life. Here the poet wants to attract our focus or attention towards the beauty of nature. यहाँ पोएट ये सब जो कह रहा है वो क्या बताना चाहता है, वो हमारा अटेंशन लेना चाहता है. कहाँ? वो अटेंशन लेना चाहता है ब्यूटी ऑफ नेचर के प्रति. आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भूलते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल ब्यूटी की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं. आज आप घरों में देखते होंगे कि जो रियल फ्लावर्स हैं वो बहुत कम ही दिखते होंगे और जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वो ज्यादा दिखते हैं. दिखते हैं या नहीं दिखते? तो हमारा लाइफ जो है वो आर्टिफिशियल चीजों से भरता जा रहा है. आवर लाइफ इज फुल ऑफ आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर इग्नोरिंग द नेचुरल ones. The poet is just complaining against all these activities through his poem and requesting also to focus on the beauty of nature, because beauty of nature is the real beauty, it is not the artificial one. And we are also sons and daughters of this nature. हम लोग जो है इस प्रकृति के ही sons and daughters हैं, इसलिए हमें इस पे ध्यान देना हो.
तो वन साइड वी आर इग्नोरिंग इट एज वेल एज वी आर डिस्ट्रॉइंग इट। हम लोग इसको इग्नोर भी कर रहे हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो हमें इसे इग्नोर भी नहीं करना है और इसे हमें प्रोटेक्ट भी करना है, इसके हमें संरक्षण भी करना है। So this is the theme of the poem, in which the poet wants to take our attention, our focus towards the beauty of nature, which is being ignored by the modern man. In ancient time, people used to worship all the natural things. आपने देखा होगा पुराने समय में लोग जो हैं जितने भी नेचुरल चीजें हैं उनको वर्शिप करते थे। आज भी पेड़ों की पूजा होती है ना, जानवरों की भी पूजा होती है। हम लोग गाय की भी पूजा करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। नाग पंचमी में नाग की पूजा होती है। तो ये सब क्या है? दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। तो हमें भी इनको संरक्षित करना है, इन पे फोकस करना है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम अलॉट। आपने पोएम को एंजॉय किया होगा। डिड यू एंजॉय द पोएम? ओके, वेरी गुड।